Hi all, Ashish Kyal here. Very warm welcome to Ashish Kyal Trading Gurukul. This is Friday at 4 and आज मार्केट के बारे में बात करने में मजा अलग ही आएगा क्योंकि निफ्टी रुक नहीं रहा है और यहाँ पर 18,180 के लेवल के आसपास 19,180 इज वेयर निफ्टी इज. तो यहाँ से आगे क्या होने वाला है, कौन से लेवल्स ओपन हो गए. इट्स फैंटास्टिक टू सी every single one of you, and this webinar is exclusively live on Zoom only. So we have decided interaction becomes much easier, participation becomes much better, so it becomes much convenient for us to interact and look at every one of you. So great to see you, Chinmay also here, Tara Chand, very warm welcome, Aditya, Deepak Sarin, good to see you always. You are very active, Deepak, on the mentorship Telegram. I keep seeing your messages and Rimple keeps responding to that, so I do not enter the conversation क्योंकि आपको आपके query का आंसर मिल जाता है, but does not mean I am not checking what you are doing. Deepak Sarid, so are you aware about that? Gaurav Narware, great to see you also here. And बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्केट सिनेरियो है, तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि क्या यहाँ से होना चाहिए. 19,180 also done above 19,111. बहुत ही सुपर चला. जो लेवल्स की बात की थी, जो लेवल्स मैंने मेंशन किए थे, ट्विटर पे दिए थे, और निफ्टी ने फोर्थ वेव कंप्लीट करके फिफ्थ वेव का टारगेट अचीव किया, जो हम बात कर रहे हैं बहुत समय से, राइट. आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट द लेवल्स ऑफ 19,111 एंड दैट फिफ्थ वेव शुड हेल्प टुवर्ड्स दैट. तो अभी आगे करना क्या है, ये करने के पहले एक बहुत ही क्विकली मैं पोल लेना चाहूंगा. व्हाट डू यू थिंक इज द निफ्टी ट्रेंड इन द कमिंग वीक. बहुत इंटरेस्टिंग आउटकम होगा आज के पोल का, क्योंकि लाइफ टाइम हाई पे बंद हुए 19,000 के ऊपर है. तो ये पोल का आउटकम होगा क्या, मैं तो वो देखने के लिए वेट कर रहा हूँ. पार्टिसिपेट करिए सभी लोग, आप लोग यहाँ पर इंश्योर करिए दैट यू आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस पोल वेरी क्विकली, बिकॉज एंड मीनवाइल मैं ओपन कर रहा हूँ मेरा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट. सो यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है जो हमें देखना है कि what is that you are right now looking for Nifty आने वाले फ्राइडे तक. when I say Nifty by coming Friday, I mean to say आने वाले फ्राइडे तक. एंड दोस्तों, लास्ट वीक में हमारा मास्टर ऑफ साइकिल्स का सेशन था, बहुत ही अमेजिंग सेशन था. बैंक निफ्टी ने वो लेवल 1 दिया था हमने मास्टर ऑफ साइकिल्स में, वो प्रोटेक्ट किया, वहां से रिवर्सल हुआ, और 54 डेज टाइम 28 जून को था. बैंक निफ्टी जस्ट एक दिन पहले वहां से रिवर्स हुआ एंड बाउंस बैक. आर यू देयर पीपल फ्रॉम मास्टर ऑफ साइकिल्स प्रोग्राम, आर यू सीइंग दैट ओवरऑल कि कैसे मार्केट बैंक निफ्टी खास करके बाउंस बैक होके. शेरॉन इज हियर फ्रॉम एमओसी, मिहिर इज हियर, लवली. चलिए ये मैं एंड कर रहा हूं यहाँ पर. पोल बहुत इंटरेस्टिंग है, ये रहा रिजल्ट्स में शेयर कर रहा हूं आप लोगों के सामने. यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि 61% people are still, only 61% of the people are bullish. 39% are still not bullish. Oh wow, that's surprising to me actually. I thought maybe 75-80% लोग bullish होंगे मार्केट में. आपके साथ में मैं ये पोल का आउटकम शेयर कर रहा हूँ, बट लुक्स लाइक बहुत कम जन है जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट करेक्शन होगा. बहुत ज्यादा, आई मीन टू से बहुत सारे जन है जो एक्सपेक्ट करें कि मार्केट में करेक्शन होगा. 39% इज नॉट अ स्मॉल नंबर, which is showing that people are still apprehensive about this rally. Now that's something interesting sign. And यहाँ पर मेरी आवाज आ रही है आपको, शायद जूगल को मेरी आवाज कम आ रही है. सो एंड आगे बढ़ने के पहले एक और क्विक अनाउंसमेंट है कि नागेशा पुरानी, he won Nifty expiry contest. Brilliant guess by him, जो हम रन करते हैं एवरी मंथली एक्सपायरी के लिए. एंड नागेशा इज ऑल्सो अ मेंटी आई सपोज, एंड इट्स फैंटास्टिक. एक और जन ने गैस किया था एग्जैक्ट नंबर, लेकिन उसने 2 बार गैस किए थे, तो वो एक इनवैलिडेट हो गया बिकॉज 2 times. आई थिंक राजेश someone who guessed the exact number, but the problem he guessed twice. You should have only one. नहीं तो ऐसे तो यार 10 बार लोग कॉन्टेस्ट में गेस करके जीत जाएंगे. सो यू नीड टू हैव ओनली वन थिंग. यहाँ पर एक और चीज है, संदीप इज सेइंग आई बुक फुल प्रॉफिट ऑन निफ्टी बॉलिंगर बैंड्स. वाओ, फैंटास्टिक.
चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। निफ्टी बाय किया था उन्होंने 18670 से बॉलिंगर बेंच के बेसिस पे। लवली। सो आई एम स्टॉपिंग द रिजल्ट्स टू बी शेयर्ड अक्रॉस एंड यहां पर मेरा ट्रेडिंग व्यू मैं ओपन कर रहा हूं, जहां पर हम देखेंगे निफ्टी का लेवल्स देखेंगे एलियट वेव के बेसिस पे, और फिर बाद में हम अगर टाइम मिला तो वी विल आल्सो सी ऑन द बेसिस ऑफ गैन की क्या हो रहा है. सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई एम ओपनिंग अप द चार्ट हियर ऑफ निफ्टी एंड let me open up a blank chart of Nifty so that we can start right from what is happening there. क्या लग रहा है वेव थियरी के बेसिस पे. और ये रहा मेरा एलियट वेव काउंट, मैं अभी फिलहाल आपके सामने शेयर कर रहा हूं. निफ्टी पे एलियट वेव का काउंट मैं आपके सामने रख रहा हूं. यहां पर ये रहा एलियट वेव काउंट. नियो वेव के बेसिस पे देखना है निफ्टी को, चलिए देखेंगे. पहले तो एलियट वेव के बेसिस पे देखते हैं कि क्या लग रहा है मार्केट में, व्हाट इज निफ्टी लुकिंग लाइक. हमारा जो टारगेट था वो आ गए 19111. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लेवल्स जो मेंशन कर रखे हैं मैंने, यहाँ पर था. इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं ऊपर, जिससे आप ये चार्ट को देख पाए सही तरीके से. सो आई एम गोइंग टू शिफ्ट दिस लेवल्स अप. और यहाँ पर वेव 5 है जो फिलहाल ऑन गोइंग है. सो निफ्टी का एलियट वेव चार्ट आपके सामने है. दिस इज द वेव काउंट बेसिस ऑफ एलियट वेव. I know you people are looking for a neo wave outlook also, but right now we are looking at Elliott wave counts only. So as per the GPS, we are doing exceptionally well. Nifty ने किया वही जो करना था. फोर्थ वेव हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ऑन गोइंग था. उसके बाद में 19111 का टारगेट था, which it has managed to surpass on the upside. Are you able to see my chart? Now what I'm going to look at is the channel. So this is the channel of Nifty that you can clearly see. ओके यहाँ पर आप चैनल देख रहे हैं निफ्टी का बहुत ही क्लियरली. और यहाँ पर यू कैन सी 1 2 3 4th है. दिस फिफ्थ वेव हैज बिकम एक्सटेंडेड वेव दैट वी कैन सी दैट. फिफ्थ कैन बी लॉन्गर देन थर्ड वेव, यस, बट थर्ड कैन नॉट बी दी शॉर्टेस्ट, वो याद रखना है आपको. और यहाँ पर अगर हम देखेंगे थर्ड शॉर्टेस्ट नहीं होना चाहिए. अगर थर्ड वेव शॉर्टेस्ट हो गया तो हमें फिर से रीवर्क करना पड़ेगा. तो यहाँ पर हम एलियट वेव के पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे कि जीपीएस क्या बता रहा है, हम है कहां पर, तो फिलहाल हम यहां पर कंपेयर करेंगे कि कहां से निफ्टी मूव हुआ. सो आई एम गोइंग टू लुक एट दिस ईयर. और साथ ही में यहां पर मैं 1 2 3rd 4th यहां कंप्लीट किया हमने. उसके बाद में 4th कंप्लीट होने के बाद में वी हैव अगेन 1 2 विच इज ब्रैकेट 1 2 जो ये आप देख सकते हैं. और यहां पर थर्ड कंप्लीट किया. फोर्थ ये कंप्लीट हुआ ब्रैकेट वाला यहां पर, और ये चल रहा है फिफ्थ. फिलहाल हम कहां पर है, वी आर हियर. ओके, सो जीपीएस क्या बता रहा है हमारा, हम कहां पर है, वी आर हियर. दैट इज व्हाट द जीपीएस is suggesting. Sudipto is saying nice trend predicted and captured, special cheers. Thank you for that. तो हम अभी फिलहाल यहाँ पर है, यहाँ टॉप नहीं पकड़ना है, ये मान के चलना. अभी देखते हैं कि ये आगे क्या होने वाला है. ये तो हमें समझ में आ रहा है कि यार फिलहाल तो हम इधर है. अभी देखते हैं फिबोनाची प्रोजेक्शंस के बेसिस पे. ये रहा फिबो प्रोजेक्शंस, ट्रेंड बेस्ड फिबो प्रोजेक्शन अगर मैं ले रहा हूं, एंड आई एम गोइंग टू मेजर दैट फ्रॉम द पॉइंट. ये फोर्थ वेव था, सो और ये थर्ड वेव है. सो इफ आई चेक वेव 1 अगर यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, थर्ड वेव कितना है वेव 1 के सामने, थर्ड वेव इज इक्वल टू 1. वाओ, सो फिफ्थ कैन बी बिगर देन थर्ड. गाइस, आर यू देयर विथ मी? रूल क्या है एलियट वेव का? रूल है वेव 3 कैन नॉट बी दी शॉर्टेस्ट ऑफ 1 3 एंड 5. यहां पर अगर आप देखोगे, सो वेव 3 यहां पर इक्वल टू वेव 1 है. ओके, इक्वल टू वेव 1 है. आर यू एबल टू सी दैट? If it is equal to wave 1, we can say that fifth wave. अभी fifth कितना है थर्ड के कंपैरिजन में देखते हैं. So fifth wave in comparison to wave 3, what is it? यहाँ पर आए, fifth wave को मेजर किया और देखते हैं यहाँ पर इक्वालिटी के आसपास का है.
तो फिलहाल फिफ्थ वेव 76.4% ऑफ थर्ड है, 60 और 19,359 का जो लेवल है वो इक्वालिटी है फिफ्थ का. नाउ हियर MOC participants of last weekend, I am asking you what is the Gann level that we derived above 18,838. आप बता सकते कौन सा Gann का लेवल है जो हमने डिराइव किया था 18,838 के ऊपर. एग्जैक्ट लेवल चाहिए 19,393. 19,111 Gann लेवल नहीं है, Gann लेवल की मैं बात कर रहा हूं. 19,393 का लेवल है. तो आज का जो क्लोजिंग है वो काफी क्रूशियल लेवल पे है दो चीजों से. कैन यू टेल मी व्हाई? सो यहां पर मैं फिलहाल तो ये निकाल देता हूं जो हमारा टारगेट आ चुका है. ओके, नाउ इफ आई एम लुकिंग एट दिस चार्ट, वी आर एट अ वेरी वेरी क्रूशियल लेवल. सो निफ्टी इज एट क्रूशियल चैनल. देख रहे हैं आप, क्रूशियल चैनल hurdle, which is also 76.4% of wave 3. So next Gann level is 18,000. Sorry, I'm still in the world of 18s. It is 19,391, not 93. 19,391 है जहां तक मुझे ध्यान में है दोस्तों. So 19,391. So यहां पर what is the GPS suggesting? What do you think? Are we going to go towards that level? या यहां से डिप आएगा? क्या लग रहा है दोस्तों ये देख के? मैं पहले आपको पूछता हूं फिर मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर क्या करना चाहिए. सो डिप देन द हिट. ओके, तो यहां पर ऐसा लग रहा है कि पहले एक डिप आएगा. So यहाँ पर let us just look at the overall trend. Now I'm going to talk from a trader's perspective. This is what I keep telling my mentees also and the new mentorship participants also. I'm going to tell you one thing. Remember one thing, never fight the trend. ठीक है, simple logic है. Do not fight the trend. Trend is your friend. भाव भगवान से, उसके अगेंस्ट नहीं जाना है. Now यहाँ पर भले ही हर्डल है निफ्टी पे, तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर हम फिलहाल वेव 5 में है. एक सेकेंड, मेरा फिफ्थ वेव डिलीट कैसे हो गया, मैं वो देख रहा हूं. यहां पर फिर से लगा देते, फिफ्थ वेव आ गया. हाँ, फिलहाल हम वेव 5 में है. यहां पर अगर हम देखेंगे, दिस इज 61.8% लेवल. यहां पर एक हर्डल है चैनल का, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड लॉन्ग करने के लिए नहीं है. सो आई एम आस्किंग माय पास्ट मेंटीज, इफ द रिस्क रिवॉर्ड इज नॉट फेवरेबल फॉर गोइंग लॉन्ग और बाइंग एन ऑप्शन या फ्यूचर्स, व्हाट कैन यू डू? व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू? थिंक बिफोर यू आंसर. इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. We can sell options. Exactly, sell OTM option. So you can still ride the trend. आप ride कर सकते हो ट्रेंड को फिर भी by selling OTM options. That is the strategy we need to follow. अगर आपको फिर भी bullishness है तो you can buy call and create a spread by selling a call option. That kind of strategy can be adopted. But what you should avoid doing is buying a naked call option at this juncture. भले यहां से निफ्टी 19,500 क्यों ना चला जाए, यार मेरे सेटअप में रिस्क रिवॉर्ड में फिट नहीं होता है तो नहीं करना है. और अगर आप लॉन्ग हो तो ट्रेल करना है, सिंपल राइड करना है यार, सेकंड गेस करना ही नहीं है मार्केट को. आई हैव सीन व्हाट पीपल डू इज, वंस द मार्केट इज ओवरबॉट, आरएसआई अराउंड आवरली आरएसआई 80 पे है, 15 मिनट्स भी ओवरबॉट है, दे स्टार्ट सेइंग मार्केट नीचे गिरेगा नीचे गिरेगा. अरे व्हाई? अगर गाड़ी की स्पीड आपकी 120 किलोमीटर पर आवर पे है, जरूरी थोड़ी है आप रिवर्स लेना चाहते हो. आप स्लो डाउन हो सकते हो, मे बी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जाओगे, लेकिन दैट डज नॉट मीन यू वांट टू टेक अ रिवर्स. सो दैट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग. You don't really want to take a reverse. So the options that you are going to do is to sell put options on the downside, or maybe to sell a far away strangles to keep riding it. And you know, when the markets are this way,
and if you are missing the trend, you should take at least ones and twos. क्या चाहता है यार, कुछ तो बने. Okay, in case you are missing the trend. If you are riding the trend all the way, then keep riding it. Do not second guess this market. Buy on the dips, buy on the dips, buy on the dips is still intact. यहाँ पर एक चीज था, ये जो रैली आई उसके पहले एक वेज पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा था कि यार हो सकता है मोमेंटम कम हो रहा है, वेज पैटर्न बन रहा है, लेकिन मार्केट ने मोमेंटम ब्रेक कर दिया ऊपर में. सो इट इज नॉट अ वेज पैटर्न. एंड overall, if I'm looking at the chart here, the target for Nifty is around 19,359. That's my target for Nifty as of now. Or we can also expect it to be going towards Gann level. So what is my next Gann level? Mera next Gann level is 19,391. Correct me if I'm wrong. And हमारा equality level आता है 19,359. That's my equality level that I am seeing here. Is it clear, every one of you? समझ में आ रहा है हम कहां पर है? तो फिलहाल तो हम ऊपर की ओर है और उसी के बेसिस पे हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें कि कहां पर यहां से निफ्टी जा सकता है बेसिस ऑफ क्लियरली Elliott wave. And all the three waves cannot be equal. As per Neo wave, yes, this is not Neo, this is Elliott wave, so we can have equality. Third wave is not the shortest, is the only rule. So as per Elliott wave, this is allowed. As per Neo wave, not allowed. Neo wave में हम इसे diametric pattern के form में देख रहे हैं, and we are moving in the form of G wave right now. And G equality to A wave होता है, तो हम उस form में फिलहाल है. और साथ ही में यहाँ पर अगर हम देखना चाहे तो हम एक और चीज का यूज कर सकते हैं जो कि है वॉल्यूम प्रोफाइल, जो हमने बहुत टाइम से नहीं देखा है दोस्तों. सो आई एम ओपनिंग अप अ वॉल्यूम प्रोफाइल चार्ट फॉर ऑल ऑफ यू टू सी where is that Nifty has created a huge volumes in this entire rise is what we want to check, because that will help us to understand what is the overall support for this market on the downside if at all it comes down. देखिए वॉल्यूम को दोस्तों, वॉल्यूम प्रोफाइल बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. It tells us what is happening behind the scenes. So this is where I am seeing my volume profile. Are you able to see this chart? Every one of you? वॉल्यूम प्रोफाइल है यहाँ पर. So यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पता चल रहा है कि मेजर accumulation by big players have happened at 18,324. This is futures chart. I'm going to zoom this across. We can clearly see the major support now is 18,693 और 18,693 के आसपास बहुत दूर है. जो ये स्विंग का लो है वहां पर एक मेजर वॉल्यूम बना है मार्केट में. अगर मैं और जूम इन करता हूं जस्ट टू सी कि करंट मार्केट में वॉल्यूम्स हो कहां रहा है इस मार्केट में. लेट मी हाइड माई सेल्फ फ्रॉम हियर सो यू आर एबल टू सी दैट. आज के दिन में तो यार वॉल्यूम बहुत ही कम था. मेजर वॉल्यूम इज नॉट हैपनिंग हियर. लेट मी ओपन अप सेशंस वॉल्यूम एंड सी कि कहां पर वॉल्यूम आज के दिन में हुआ है. आज के दिन में वॉल्यूम नहीं था पूरे राइज में. दिख रहा है ये गाइस? दिस इज अ वॉल्यूम प्रोफाइल चार्ट. वॉल्यूम प्रोफाइल हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड वेयर इज द मेजर एक्यूमुलेशन हैपनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन हैपनिंग और कहां आज के दिन में सपोर्ट है, कहां रेजिस्टेंस है, ये सारी चीजें. सो वॉल्यूम प्रोफाइल along with Elliott wave can be classic combination to identify key support areas. So अगर हम बोलते हैं, so if it is buy on dips, where is what is the volume suggesting? So this volume is different than behind the scenes volume इसे कहते हैं. Big players की activity दिखती है यहाँ से. Are you aware about this thing, guys? Big players activity. Because this we have not used it for quite some time. Okay, wow, this is something बहुत कम जन को पता है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा. ये जो वॉल्यूम आप राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं, ओके, दिस वॉल्यूम is showing, I'll again explain, don't worry about it. This volume is showing where is the
area of accumulation that will act as a volume profile that will show. So ये volume at a price point है. This shows the volume at specific price point. And if you looking at this thing, यहाँ पर जो major accumulation हुआ है वो है 18,700 के आसपास जो हम देख सकते हैं. उसके बाद जो accumulation हुआ था वो था 18,890 पे. फिलहाल आज का जो राइज था दोस्तों, इसमें वॉल्यूम्स बहुत ही कम था. देन विच मींस आज का राइज क्वेश्चनेबल हो जाता है कि लोगों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, ना बायर्स कर रहे ज्यादा, ना सेलर्स कर रहे, क्योंकि आज के राइज में वॉल्यूम्स काफी कम है. दैट इज अ साइन. और इनफैक्ट हाईएस्ट वॉल्यूम देखोगे तो कहाँ हुआ मालूम है? एग्जैक्टली एट द क्लोजिंग टाइम के आसपास जब निफ्टी था वहां पर हाईएस्ट वॉल्यूम हुआ. और अभी जो लूनार साइकिल आ रहा है, बहुत सारे जन कह रहे 3 जुलाई को है पार्था, यू आर हियर. सो देखेंगे हम क्या होता है 3 जुलाई को. फिलहाल 3 जुलाई को शायद पॉज हो सकता है, क्योंकि लास्ट लूनार साइकिल पे पॉज हुआ था लेकिन ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ, सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ. सो 3 जुलाई पूर्णिमा पे वी कैन पॉज. सो दैट्स हाउ वी आर लुकिंग एट इट. Without much participation, how did price move so high? Because there is not much selling also. People have burnt their fingers who have been selling call options big time, and they have not able to participate now, and they are now sitting on the sidelines. Hote hai na yaar, if a lion is wounded, he will lick its wound sitting on the sidelines before getting active again. So all the call writers who have been the lions of this market have been wounded this time, and so they are sitting on the sidelines. Yes, I'm calling you the lions because you dared to come on against the trend and you have been wounded for that. So फिलहाल के लिए तो वॉल्यूम्स इसलिए कम है. तो सपोर्ट का है मार्केट का वॉल्यूम प्रोफाइल पे. द मेजर सपोर्ट, नॉट मेजर, आई वुड से the immediate support for market is around 18,970, and this is futures level guys. 18,970 मतलब 18,900 पे है सपोर्ट, विच इज अ माइनर सपोर्ट. सो 18,900 पे सपोर्ट है मार्केट का. अगर यहां से डिप मिलता है हमें तो 18,900 जब तक इंटैक्ट है, बाय ऑन डिप्स का हमें रोल अपनाना चाहिए. दिस इज फ्यूचर्स, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज एज अ स्पॉट प्राइस में कन्वर्ट करके मैं आपको बता रहा हूँ वॉल्यूम्स के बेसिस पे. Is it interesting, guys? This kind of combination of how we are looking at a volume profile, how we are combining that with the combination of Elliott wave. So Elliott wave में क्या बताया हमें कि यार wave 5 अभी चल रहा है. अभी इशू ये है कि ऊपर का रेजिस्टेंस नहीं है वॉल्यूम, क्योंकि आज तक मार्केट वो लेवल पे ही नहीं गया. तो ऊपर का हर्डल कैसे मिलेगा? ऊपर का हर्डल एक ही चीज दे सकता है आपको, या दो चीज रेदर. एलियट वेव के हिसाब से एक फोरकास्ट बनेगा जो फिबोनाची देगा, या आपको मिलेगा अलोंग विथ गैन लेवल्स. सो गैन लेवल्स हर्डल इज 19,391. एलियट वेव हर्डल इज, when we come to the wave theory that we saw here, the hurdle that we checked is around 19,359. So wahan par hai. But the thing is, we are right now on the channel resistance. We need dips and then we will buy again. So the market is buy on dips. yahan pe main likh deta hu, as long as 18,900 is intact. So ये जो लेवल है ये मेरा 18,900 सपोर्ट हो गया मार्केट का. एंड यहां पर बाय ऑन डिप्स, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड नहीं है दोस्तों, बाय ऑन डिप्स एज लॉन्ग एज 18,900 इज इंटैक्ट. एंड देन वी माइट से यार यहां से थोड़ा और रूम ऊपर की ओर मिल सकता है. सो दैट्स हाउ यू हैव टू लुक एट वेव थियरी. 18,900 स्पॉट के हिसाब से था, 18,970 फ्यूचर्स पे था. So 18,900 we are looking from spot perspective. Is it clear? I'm missing Firdaus here, my another mentee, because he has a lot of questions. I'm actually seeing that he's not here today, it seems. How does the expiry day bank nifty affect nifty positionally? Expiry day change nahi ho raha hai bank nifty ka dost. Thursday ka Thursday pe hi hai. They have again rechanged it to Thursday. And very interestingly guys,
I was playing खिलाड़ी number 1 this week also, but I did not win. साथ में मतलब I made around I think 4.5 odd % के आसपास कुछ बनाया, 5% के आसपास शायद, and the other contestant just won. Like ठीक है, still close positive. Okay, so there are a lot of questions with respect to the Neo wave count. Do you need a Neo wave count on this? Shall I do a Neo wave count on this, or is it okay? अच्छा, जाते जाते एक और चीज Neo wave count के अलावा, tomorrow I am going to be here live again for 2 hours at 11 a.m. Do you want to be a part of that? 11 बजे कल. Do you want to be a part of this? Firdaus, you are here finally. I was waiting for you so that I can start my Neo wave count. Okay, just kidding. Okay, so oh, you just joined. I actually talked about you about 2 minutes back that I'm missing Firdaus, and you joined in. Oh, that's telepathy, I suppose. Okay, so what I was saying is tomorrow at 11 a.m. I'm going to be there. The link, my colleague will share it across right now with everyone. Be there 10 minutes prior, क्योंकि हाउसफुल होने के बाद आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे. We will talk about candlestick, we'll talk about time cycles and what is time suggesting for the coming week. कौन से डे पे बाइंग वापस इमर्ज होगी, कब एंटर करना है. सो वेव थियरी से हमें टारगेट्स मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, टाइम से मिलेगा, कौन से डे पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी. सो दैट ऑल थिंग्स वी विल कंबाइन टुगेदर. यूट्यूब पे फॉलो करना ना भूले. मेरा एक बॉलिंग अप बैंड्स का सीरीज चालू है and I'm sure you are loving those series, seeing all the comments, so do that. ठीक है, चलिए नियो वेव के ऊपर जाते हैं. I'm going to hide everything across and I'm going to talk about wave theory, neo wave, in a very, very simple way. Sonu Yadav, you are my best guru of market. I'm no guru, I'm just passionate trader. I enjoy looking at markets and I'm sharing what I know. Pallavi is anyways watching the bowling a band series. Wow. So this is A, B, C. This was D here. This is wave E, I think got completed here or maybe a little here. This is F for sure done, क्योंकि अगर आप देखोगे prices came to mid band only twice this entire rise and this was one of it. So I think F is done and this is wave G which is going on for sure. And G usually mimics A. Diametric pattern का rule क्या है? Rule नहीं, guideline क्या है? G tend towards equality with A, E tend towards equality with C, and F tend towards equality with B. That's the guideline. Now G looks very similar to A. So if you're looking at it, and Ichimoku cloud पे बहुत ही clear हो रहा है दोस्तों. If you have been a part of Master of Waves or mentorship, you might know how to look at it. I plotted Ichimoku cloud. Why is it not showing here? Okay, what's wrong with the trading view? Let me again re-add Ichimoku cloud. Not sure why it didn't load. Okay. Yes, so if you are looking at this, I'm going to remove my discount and ignore the Elliott wave count. This is purely from the neo wave perspective. A, B, C, D. See, B went to cloud, below the cloud. D went below the cloud. F went below the cloud. Classic way of looking at wave pattern. B went below the cloud. D went below the cloud. F went below the cloud. E did not go below the cloud. See, every time support. So this has to be G. If this is G wave, this is G wave. And guys, we are in the week 24th of June, 85 week cycle का week है. Momentum बन रहा है फिलहाल तो market में, इसीलिए. और 6th of July को 55 days का time cycle है. तो हो सकता है ये G complete होगा, एक X wave बनेगा and we might continue. We might, who knows. So how will a neo wave practitioner know कि ये पूरा top बन गया market में, is to look at a faster retracement below the G leg, which will be surprised for everyone. तो 18,700 के नीचे अगर निफ्टी आया, that will be an indication of end of the rally for now. अगर वो नहीं हुआ, तो the fall that might come can be just an X wave again. So let's see how this pans out. It's too soon to conclude कि G complete कहाँ हो रहा है. ये rise बहुत sharp है. I'm not getting in the middle of it. Rather, I'm riding this trend.
because getting in middle of it, I don't want to burn my fingers. I want to ride the trend. I'm a trend follower guy. And when will I take a reverse trend? Once I see Nifty breaking 18,900 volume profile support, breaking 18,700, then I know for sure कि यार टॉप बन गया. उसके बाद करेंगे ना रिवर्स में ट्रेड. क्या जाता है स्टार्टिंग का 300 पॉइंट का फॉल मिस किया तो. टारगेट ऑफ वेव जी इज इक्वालिटी. सो दो टारगेट मिलेंगे हमें. एक तो इक्वालिटी मिलेगा. मैं इचिमोको को हाइड कर देता हूं. I'll hide everything now. So we will have a equality or 61.8% of the wave A. Wave A starting यहाँ से था. अगर इसको मैंने मेजर किया तो मेरा इक्वालिटी कहाँ गया. रिट्रेसमेंट नहीं लेना है मुझे भाई, फीबो प्रोजेक्शन लेना है. Okay, so if I project it on the upside here and from here I get my target. Wow, we are standing bang on 61.8. 61.8 पे है. 19,332 76.4 आता है. इक्वालिटी 19,546 है. सो देखते हैं. फिलहाल तो हम 61.8 पे बंद हुए. चैनल हर्डल है तो मंडे कूल ऑफ होना पॉसिबल है. उसके लिए टाइम साइकिल चेक करो दोस्तों. अगर टाइम सही है तो पता चल जाएगा यार मंडे कूलिंग ऑफ पीरियड है. तो वो आपको टाइम से पता चलेगा. आई एम नॉट ड्वेलिंग इनटू दैट. टाइम के बारे में डिटेल में डिस्कशन कल करेंगे. एंड यहाँ पर 76.4 19,332 के आसपास, तो मतलब 19,300 से 19,390 is the ultimate level, I think. Firdaus is following 75-minute time cycle. It worked this time as well. Fantastic, Firdaus. Do share it on the mentorship group, Telegram group, mentorship Telegram group. Do share that cycle across. Let me check on that cycle of 75 minutes which you are using. तो टारगेट हमारा आता है 19,330 से लेके 19,390 तक. Those are the target levels we are looking at Nifty using wave theory, using neo wave, using Elliott wave. फिलहाल अगर यहाँ पर पॉज होना चाहिए ऐसा लग रहा है मुझे, but I'm riding by way of various different ways. So any questions please? जाते जाते I'm going to ask you one thing. Do you want to be learning this entire science of trading the market using Gann, wave theory, time cycles, और साथ ही में options पे कैसे trade निकालना? I'm just asking you. If you want to do that, you can be a part of the mentorship program that is started in terms of with MOC, but you can still be a part of this mentorship program. I'm taking a very quick poll, guys, for you all who want to be a part of this. And it's going to be a lovely way of learning things that you always wanted to learn. So we have already formed. So in mentorship में क्या क्या होता है? We have formed a private Telegram group where the discussions have started. People have started sharing their learnings. Already that's one. Secondly, if you're registering now, you might get access to Master of Cycles. You will get access to Master of Cycles. And यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि क्या होता है. सौरभ गौतम, you were there for the Master of Cycles, right? Okay, he's saying made 10% of the capital this month. Thank to you too for the good days. Okay, fantastic. Today you burned. Why are you shorting the market, Saurabh? For doing that. So don't short the market, right? When can we expect 19,390? चलो कल बात करेंगे यार सुबह 10 बजे 10 नहीं 11 बजे, which is on 1st of July 11 o'clock. We will meet again tomorrow for 2 hours. Time के बारे में बात करेंगे. But if you want to be a part of this mentorship program, you can register today also for mentorship, and your journey will be amazing. You will be loving what we do, and we will have a step-by-step approach towards timing the market, wave theory, ये Ichimoku cloud कैसे combine करके trade setups बनाना है. And the private Telegram group is already active, and we have started kicking there. So a lot of learnings will be there. If you are with me for lifetime, be there. And how do you register? You can use the link my colleague shared across, and there you will get the access to everything. Any questions, please? I'm open for questions, any doubts, any queries, any questions that you might have. I'll be more than happy to answer it. When is mentorship starting? So essentially mentorship is starting. The first day one of mentorship is going to happen around 27th of July, which is
evening 7 to 10 we will have. But your learning will start today because we will give you the video access that you have to start going through. We have already given to the mentees who have joined in, and you will also be learning about time cycles. We'll give you access to that, and about master of technical analysis and all of those things. So your learning starts now, not 27th. And then we will have live trading sessions. We'll implement what you have learned, all of those things together. We are going to do that. Possibility of reversal in next week, वो कल discuss करेंगे दोस्तों. Possibility of reversal. FLD target 19,400 you had given some time back. It works like magic. FLD is a time cycle concept, and it works like magic. Reversal next week की कल बात करेंगे 11 बजे. चलिए आज के लिए इतना ही. Link for mentorship, my colleague has shared across. Sharad, the link for mentorship program is shared across with you. You can just drop your number also, and they will then help you out with the registrations. The second one falls on. Thanks, Sharad, for sharing it across. The link my colleague will share to everyone. So please share it to everyone, anyone who wants to be a part of it. Great, guys. Then I'm ending my session here. Lovely talking to you all this Friday at 4. Keep rocking. Keep doing great. Keep making money from markets, but do not forget to use stop loss. And very quick disclosure and disclaimer, we are SEBI registered research analysts. So whatever we are doing here is purely from learning, educational perspective. I'm not recommending anyone to buy, sell, do any such thing. So just keep that in mind. And it's a wonderful time. See you tomorrow morning, 10 minutes prior to 11. And otherwise you will not be able to join in for my interaction on Zoom. Thanks a lot, guys, and become a wonderful trader. Thank you very much. And jate, do not forget to download my app also, Ashish Kyal Trading Gurukul, in case you want to be in touch. So you can download the app. The app link will also be shared across by my colleague. वहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं. You might want to just see what you might need, what you might help on. So do download the app, which is shared across. And by the way, I have my book, in case my book helps. So aim एक ही है दोस्तों. I want people to learn and trade. That's the aim. Okay. The link of the app is shared across. You can simply click on the link or search for Ashish Kyal Trading Gurukul app, and you will get it. Thank you very much. Have a wonderful time.